a description on 24th October 2025 related to a patient जिसकी coronary angiography normal आई है और patient काफ़ी sick था 79-year-old 7 दिन से ICU में थे because he had a heart failure यानी कि definitely he had a severe heart problem. Heart failure दो तरह के होते हैं, एक होता है preserved ejection fraction जो कि थोड़ा रेयर होता है, दूसरा होता है reduced ejection fraction HFrEF and HFpEF. This patient had a normal ejection fraction and still he had a severe heart failure because his lungs were having pulmonary edema. Patient was having severe hypertension. जिसको hypertensive heart failure भी कहते हैं. Blood pressure 240/120. It was very difficult to control the blood pressure despite very high dosage of intravenous nitroglycerin. दिया हम लोग ने इवन इट वाज गोइंग अप टू 12 to 15, 20, 30, 40 माइक्रोग्राम पर kg per minute, which is very high dosage. We started cilnidipine, and then on a very high dosage of cilnidipine, finally we were able to taper off nitroglycerin. The patient was now fit for angiography, and his ejection fraction, he had a very high HS tropi, and वो कहाँ गया बेटा, इसका रिमोट कहाँ है, सुनो. अब इनकी एंजियोग्राफी हमने करी अभी और एंटीप्रोबिन भी और आज एंजियोग्राफी करी हमने. तो एंजियोग्राफी इज यू कैन सी द ब्यूटीफुल एंजियोग्राफी हियर एंड लेफ्ट मेन नॉर्मल, लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स आल्सो नॉर्मल. तो मैं इसको रोक के दिखाता हूँ हाउ यू डिस्क्राइब द. दिस इज लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, दिस इज लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी अनदर ब्रांच, and this is another branch which is left anti descending artery. Mild plaquing here, no major stenosis. In fact plaquing भी नहीं है. This is left anti descending artery in a AP cranial view. Left main, left anti descending artery. These are septal arteries. This is diagonal first and this is circumflex, two branches. So this is how you read the coronary angiogram. This is again RA view and this is AP एलियोकॉर्डल व्यू. नाउ राइट कोरोनरी आर्टरी इज एब्सोल्यूट नॉर्मल. तो 79 ईयर्स की एज पे नॉर्मल एंजियोग्राफी इज रेयर बिकॉज यू स्टिल मे हैव सम प्लैकिंग बट हियर देयर इज नॉट इवन अ सिंगल प्लैक टू जस्टिफाई HS tropi. So now we have done, this is a renal arteries are normal. So to give you the small summary, this patient had a severe heart failure requiring non-invasive ventilation, which is a very high level of oxygen, FiO2 and high level of diuretics, taking out all the fluid, negative balance, some antibiotics, anti-anginals, antiplatelets, angiography normal. Patient will be discharged soon.